So standard enthalpy of reaction. If we have this reaction, I have a reaction of this format. A plus B given C and D. Small a, small b, small c, and small d are the coefficients of the species. Then delta HR is given in this manner. You multiply the coefficient of each species with its corresponding enthalpy of formation. You first take all the products and then you subtract from that all the values of the reactants. That means you first take the enthalpy of formation of each product, multiply that by the respective coefficient, then add up all such values of products, and then from there you subtract all the values of enthalpies of formation for the reactants. So this is how you get the enthalpy of formation. This is how you get the enthalpy of the reaction. For any reaction, you can use this formula. I gave a reaction where you have two reactants and two products. I can extend the concept to a reaction which has only one reactant and two products. Or let's say when we have a reaction containing two products and only one reactant. So two reactants, one product, two products, one reactant, two reactants, two products, whatever it may be. That doesn't matter. Accordingly, we'll keep adding. So if it is standard, then I have to take standard values. That is, enthalpy of formation should be standard if I want to find out the standard enthalpy change. Hess law. The heat absorbed or released in a chemical reaction is the same whether the process occurs in one step or several steps. Enthalpy is a state function, which means that you just need to focus on the initial reactant and the final product. Right? For example, if I have a reaction from A, that is a reaction wherein A gives me a product B. Then B plus something, and then I get D, which means this is the first step, and this is the second step. So the reaction is happening in two steps. If I take delta H of the first and delta H of the second and add up, then I can say that the total delta H is the heat released or gained when A would form D directly. So whether A forms D directly or it forms D through another reaction in between, the final delta H will be the same, irrespective of the number of steps. That is why we are saying that Hess law is helping us evaluate the different enthalpy changes for the steps. Now let's do one example. Remember, treat the chemical equations as mathematical equations. That means just like we used to have different equations in algebra, linear equations in two variables, linear equations in three variables. Similarly, here also we will treat chemical equations just like the mathematical equations in algebra.
So if I add two equations, the left hand sides get added and also the right hand sides get added correspondingly. If I subtract one reaction from another, the left hand sides will get subtracted, and then I'll put an arrow, and then I'll again subtract the right hand side. Now, if I make use of Hess law, just look at reaction 1 and reaction 3. Look at reaction 1 and reaction 3. Can I say, if I add reaction 1 and reaction 3, I'll get reaction 2? Correct? How? Look at reaction 1, look at reaction 3. This is going to remain as it is on the left hand side. Half O2 and half O2 will give me 1 O2 if I add half O2 and half O2. And CO gas on the left hand side of the third equation. And also we have CO gas on the right hand side of the first equation. So I can say that CO gas will get cancelled. And so at the end I'll be left with CO2 on the right hand side. So I can say that reaction 1 plus reaction 3 is giving me reaction 2. Delta H values are given. So delta H is equal to delta H1 for the first reaction. Then enthalpy change for the second reaction is delta H2. Enthalpy change for the third reaction is delta H3. If I add two reactions, their corresponding delta H values also get added up. So this is the conclusion. We have already done this. If delta H is positive, reaction is endothermic. If delta H is negative, reaction is exothermic. Now, during a chemical reaction, the internal structures and bonds of the entities get affected. So if I'm breaking old bonds and I'm forming new bonds, obviously some amount of energy is going to be released or absorbed. So during a chemical reaction, the internal structures and bonds of the entities get affected. And that is why we have non-zero values of delta H and delta U. That means what is happening here? During a chemical reaction, the internal structures get affected. We have different products which are formed. So reactants are changing to products. That is why their internal energies will also change because we have different substances that have been formed now after the reaction. Different substances have been formed. Then their internal structures have been affected. So the internal structures have changed. Before reaction, you had different species. After the reaction, you have some other species. That is why the bonds get affected, the internal energies get affected, and as a result, the delta H values also get affected. That means delta H is non-zero. It is not zero. Some amount of energy will definitely be involved.
So we use this equation. We have learned this earlier when we were doing calorimetry. Delta H is equal to delta U plus delta NGRT for a reaction occurring at a constant pressure and a constant temperature. Delta Ng is taken only for gases. We don't take into account solids and liquids for calculating delta Ng. Now, if I'm carrying out a reaction at two different temperatures, let's say one temperature is T1 and the other temperature is T2, then I can use this equation. This is called Kirchoff's equation. What happens here? See, delta H2 is the change in enthalpy occurring at temperature T2. So the same reaction is being carried out at different temperatures. Now, if the reaction is carried out at temperature T1, some particular amount of delta H will be there. Delta H1, I'm calling it. Similarly, if I'm carrying out the reaction at some other temperature, that is T2, then again delta H will be some other value, that is delta H2. So delta H2 minus delta H1 upon T2 minus T1 is equal to delta Cp. What is delta Cp? Change in the heat capacity, right, at constant pressure. So delta Cp क्या हो जाएगा? वो भी Cp का वैल्यू चेंज हो जाएगा बिकॉज अलग अलग दो टेम्परेचर्स पे आप रिएक्शन को करवा रहे हैं. This is called Kirchoff's equation. Try to solve this question now based on Hess law. ये सब देके रखा है क्वेश्चन में. ये भी दिया है x and y are positive. That means can I say minus x and minus y are negative? Yes, sir. Choose the correct option. Yes. पहले क्वेश्चन कॉपी करो.
Some of you have given the correct answer already. Okay, I'll start with the solution. Now, the first equation is given to us, delta H is equal to minus X kilojoule. And the third equation is also given to us in the question, delta H is equal to minus Y kilojoule. Now, I have constructed one equation, which is the second one. It was not given in the question. I have tried to formulate that, and I've tried to adjust by giving one equation, or rather forming the equation which will help me reach my target equation. What is my target? I have set a target for myself, that is the third equation. The third reaction which you see on the screen right now is my target. What do I mean by target? Target equation is something where I have to reach. But in order to reach the target, I need help of other equations. It is just like a mathematical equation. So if I have to reach my target, I need to make use of some other chemical equations, and then some mathematical operations will be performed so that I reach my target. So the second equation has been formed just for the sake of convenience in order to reach the target. इससे क्या फायदा होगा? इससे फायदा ये होगा कि हेस लॉ का यूज अगर करेंगे तो फर्स्ट और सेकंड को मैं ऐड कर सकता हूं. अगर मैं फर्स्ट और सेकंड रिएक्शंस को ऐड करूं तो मुझे थर्ड रिएक्शन मिल जाएगा. यही एडवांटेज है और इसी के लिए मैंने सेकंड इक्वेशन को लिखा है, फॉर्म किया है या कंस्ट्रक्ट किया है. Also, I know that the delta H will be a positive value for the second equation because liquid phase is getting transformed to gas. Liquid to gas अगर हो रहा है तो energy will be absorbed. That is why delta H is positive, because any endothermic process has a positive delta H. Hence, I can say Z is positive. वन टू थ्री तीनों को ऐड करेंगे, वन एंड टू दोनों को ऐड करेंगे तो 3 मिल जाएगा. दैट मींस 1 + 2 इज इक्वल टू 3. 1 + 2 विल बी इक्वल टू 3. कैसे ऐड करो तो ये कट जाएगा, दोनों तरफ है ना H2L, तो वो कट जाएगा. And hence I get the third equation. So if 1 + 2 is equal to 3, I can say that delta H1 plus delta H2 will be equal to delta H3, which means minus X plus Z will be equal to minus Y. वही लिखा है मैंने यहाँ पे. इसको रीअरेंज करो थोड़ा तो ये मिल जाएगा. X minus Y is equal to Z. Now Z is a positive value we discussed. If Z is positive, that means X minus Y is also positive, and so X is greater than Y. Any doubt? Okay, clear? Okay.
part. सर डायरेक्ट डेल्टा के नहीं कमेंट कर सकते सर? हाँ क्या सर डायरेक्ट डेल्टा के कमेंट करते थे। क्या देख के आवाज तुम्हारी सिंस वो कट रही है। गैशियस एक गैशियस स्टेट में और एक सर कुछ नहीं आपको बात क्या वो आपको आवाज नहीं आ रही है, मतलब कट क्या आ रही है। Okay, let's go to the next part. Standard enthalpy of atomizing. All right. इसका क्या मतलब है? It is the change in enthalpy the symbol is delta H E naught. It is a change in enthalpy when 1 mole of a compound This is the definition of enthalpy of atomization. But for a compound, मैंने compound word भी लिखा है. अभी मैं लिखता हूँ आगे for an element it is the for an element it is the change in enthalpy when or rather I should say like this for a solid element
So examples और rather नहीं, क्वेश्चन के फॉर्म में करते हैं. Right. Chemical equations representing standard enthalpies of atomization. For first yes, करो कोशिश करो. First one क्या होगा? फर्स्ट वन सोडियम स्टैंडर्ड स्टेट सॉलिड. क्या हो जाएगा? एलिमेंट है ना. करेक्ट. ट्राई द नेक्स्ट वन. ट्राई द नेक्स्ट वन. एक बार डेफिनेशन बता देता हूँ फिर से. ये डेफिनेशन कंपाउंड के लिए C2H6 इज अ कंपाउंड. सो ये वाला डेफिनेशन यूज करोगे आप. राइट. 1 मोल लेना जरूरी है, तो फिर से 1 मोल ऑफ द रिएक्टेंट होना चाहिए. क्या बोला है? कॉन्स्टिट्यूएंट गैसियस एटम्स. सो एटम्स के फॉर्म में लिखना है. अभी कॉन्स्टिट्यूएंट गैसियस एटम्स. दिस विल बी द करेक्ट इक्वेशन. डोंट राइट H2. एटम्स बोला है, मॉलिक्यूल्स नहीं बोला है. ये हो जाएगा. राइट. थर्ड वन. This is the third one. Done. All right. Next. One very important one, जहाँ से questions मेंस एडवांस्ड दोनों में ही आते हैं, वो करते हैं. बहुत इंटरेस्टिंग भी है. एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन.
Okay. Now, क्या है अभी? अगर मैंने सिर्फ बोल दिया एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन तो मतलब वो नॉर्मल है, मतलब स्टैंडर्ड स्टेट्स में नहीं बात कर रहे हैं। बट अगर हम लोग बोल रहे हैं स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन तो हमारे पास स्टैंडर्ड दैट इज 1 atm का प्रेशर। Okay. So when or I can say it is the change it is a change in enthalpy when symbol सर इसका सिंबल वैसा नहीं है, आपको ऐसा लिखना पड़ेगा फिर डेल्टा एच ऐसा लिखना पड़ेगा। NEUT ऐसा लिख सकते हैं। डेल्टा एच NE so it is the change in enthalpy when 1 equivalent of asset all right now certain points you have to know। क्या है point? First thing is that if सर 1 इक्विवेलेंट और 1 मोल सेम होता है? नहीं, डिपेंड करेगा ना n फैक्टर पे। अगर मैं H2SO4 बताऊं तो इसका 1 इक्विवेलेंट इज हाउ मेनी मोल्स? 0.5 मोल्स, राइट। बट अगर मैं HCl बताऊं तो उसका 1 इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 मोल।
अगर मैं ऑक्सैलिक एसिड बताऊं तो भी इसका 1 इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 0.5 मोल्स, करेक्ट। तो डेफिनेशन उसका 1 इक्विवेलेंट के हिसाब से है। आई होप यू नो व्हाट इज एन फैक्टर। हाउ कैन वी कैलकुलेट दिस? मतलब एन फैक्टर नहीं मालूम? नहीं सर। ओ ओके, फिलहाल इतना समझ लो कि जितना H होता है, जो H प्लस निकल के आ सकता है, उसको बोलते हैं एन फैक्टर ऑफ एन एसिड। मतलब क्या हुआ, ऑक्सैलिक एसिड में इफ आई डिसोसिएट ऑक्सैलिक एसिड तो ये होगा ना, दैट मींस n factor of oxalic acid is 2. In short, I can say जो भी O के बाद H है कार्बोक्सिलिक एसिड में, that is always going to tell me the n factor. अब आप मुझे बताओ what is the n factor of this? Sir, 1. 1, because O के बाद एक ही H है, correct. What is the n factor of this? 1. 1, right. What is the n factor of this? point. What is the n factor of H3PO4? 3. 3 आ सकते हैं H प्लस, क्योंकि अगर मैं इसको डिसोसिएट करूं तो ऐसा हो जाएगा, दिस इज अ डिसोसिएशन. What is the n factor of this? 2. 2. ओ ये वाला H और ये वाला H, तो 2 हो जाएगा. All right. What is the n factor of this? 2. Again 2, because I can write this in this manner, right? तो n factor एसिड का ऐसे निकाला जाता है. Now एक एक्सेप्शन टाइप का है, अभी ऐसा समझ लो H3PO3 का n फैक्टर होता है 2, ऐसा होता है. सर क्योंकि दो ही कनेक्टेड होते हैं ना. हाँ, OH 2 ही है, करेक्ट. सर ने ये इसका वो कराया था स्ट्रक्चर, Structure. राइट. एंड H3PO2 का n फैक्टर होता है 1, ये आपको बताना चाहिए. स्ट्रक्चर्स की वजह से ऐसा है, जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ कनेक्टेड होता है वही आयनाइज होकर निकल सकता है H प्लस बन के पानी में. तो n फैक्टर के बारे में थोड़ा मैंने बता दिया. नाउ अगर बेस के लिए बात की तो वैसे ही होगा, NaOH का n फैक्टर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1. करेक्ट. कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का n फैक्टर क्या हो जाएगा, 2. राइट, 2. बस हो गया, समझ में आ गया, वेरी गुड. ये याद रखो, H3PO2 का 1 होता है और H3PO3 का 2 होता है, ये आपको याद रखना पड़ेगा, ये तो एक्सेप्शन की तरह. Now what is GEQ? GEQ is equal to number of equivalents or gram equivalents, कुछ भी बोल सकते हो. Short form is GEQ. That is equal to number of moles
multiplied by n factor. You will need this for enthalpy of neutralization. G2 is equal to number of moles multiplied by n factor. What is n factor? जैसा अभी हम लोगों ने किया एसिड्स के लिए और बेसिस के लिए. Okay, now ये आपको फॉर्मूला पर लिख लो, मैं मिटा दूंगा. G2 is equal to moles into NF. What is MEQ? MEQ is milli equivalents. So 1 G2 is equal to 1000 MEQ. Okay. यहाँ तक सब कुछ क्लियर हो गया. अगर यहाँ तक क्लियर हो गया करते हैं अभी हम. Let's now solve. यहाँ तक हो गया क्लियर? All right. क्वेश्चन में आपको दे सकते हैं मिली इक्विवेलेंट्स, इक्विवेलेंट्स. So you must know. Note. Note में first point. Note का first point. क्या है first point? For a reaction between a strong acid and a strong base. For a reaction between a strong acid and a strong base, delta H neutralization is minus 57.3 किलोजूल. और ब्रैकेट में लिख सकते हैं हम लोग इसको minus 13.7 किलो कैलोरीज per mole of water formed. Okay. For a reaction between a strong acid and a strong base, delta H neutralization is equal to minus 57.3 kilojoule. Also, we can see that it is equal to minus 13.7 kilocalories per mole of water formed. अब मुझे बताओ, अगर 2 moles of water are formed in the reaction, तो क्या होगा फिर? If 2 moles of water are formed in a reaction, neutralization reaction, तो क्या होगा फिर? 114.6 kilojoule of energy हाँ, will be released. what into 2 हो जाएगा. Correct.
All right. Also, मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ. We may say that delta H neutralization is minus 57.3 kilojoule if 1 GeQ of a strong acid reacts with 1 GeQ of a strong base. So can I say that neutralization is an exothermic reaction? Because delta H is negative. So neutralization is an exothermic reaction. Okay. तो ये बहुत important point है. Next. Second. For a reaction between or I can say for a neutralization reaction where for a neutralization reaction in which any component is weak, in which any component is weak or both components are weak. So for a neutralization reaction in which any component, I can write in which one component is weak or both components are weak. What do I mean by components here? Either acid or a base. हाँ, तो बेटर इसको रिएक्टेंट कर देते हैं और both reactants are weak, comma, the value of energy released is less than 57.3 kilojoule
or 13.7 kilocalories per mole of water formed. मतलब कहने से कि लेस एनर्जी इज रिलीज, मतलब ये less exothermic है compared to a reaction where both acid and base are strong. Right? अगर एक रिएक्टेंट वीक है तो भी 57.3 किलोजूल रिलीज नहीं होने वाला है, उससे कम रिलीज होने वाला है. दोनों रिएक्टेंट्स वीक है तो भी 57.3 किलोजूल से कम एनर्जी रिलीज होने वाली है, यानी वो लेस एक्सोथर्मिक हो गया. करेक्ट? This happens because सर 1 मिनट थोड़ा ऊपर स्क्रॉल कर सकते हैं? नहीं सर, लास्ट लाइन देखना. ओके सर, थैंक यू. ओके. तो क्या होता है, कुछ एनर्जी ऑब्जर्व होती है वीक कंपोनेंट को आयनाइज करने की. इसके लिए वीक कंपोनेंट को आयनाइज करने के लिए एनर्जी इज ऑब्जर्व्ड, बिकॉज if an acid is weak or if a base is weak, it does not ionize completely to give you the respective cation and anion. नहीं होता है पूरी तरह से आयनाइज. इसके लिए थोड़ी एनर्जी वो ऑब्जर्व करता है. अगर आपको पूरी चीज को आपको डिसोसिएट यानी पूरी एसिड को या पूरे बेस को अगर आपको आयनाइज कराना है, then some energy needs to be supplied or some energy is absorbed in the process. तो ऑटोमेटिकली कुछ एनर्जी अगर ऑब्जर्व हो रहा है तो रिलीज एनर्जी कम हो जा रही है इसके लिए. Okay. Now, third point. नोट का ही थर्ड पॉइंट है. क्या है थर्ड पॉइंट? डेल्टा एच न्यूट्रलाइजेशन. अभी आ रहा है आपका फॉर्मूला. ये बुक में अवेलेबल इस तरीके से नहीं है, मैं इसको आसान करने के लिए ऐसे दे रहा हूँ. सो फॉलो दिस. थोड़ा स्टोइकियोमेट्री आएगा इसमें. सो डेल्टा एच न्यूट्रलाइजेशन इज इक्वल टू in kilocalories is equal to minus 13.7 multiplied by GEQ of अब एसिड और बेस का मतलब क्या है? आप कोई भी एक ले सकते हो, anyone. Okay, minus 13.7 into GEQ of acid or base reactant. Very important. The word reactant is very important. Plus delta H dissociation
multiplied by moles of weak reactant. So minus 13.7 into GEQ of acid or base reacted plus delta H dissociation. This is called enthalpy of dissociation. जो मैं आपको बोल रहा था कि weak है तो वो थोड़ा energy लेता है, absorb करता है. So delta H of dissociation multiplied by moles of the weak reactant reacted. सर अगर दोनों वीक होते दोनों वीक होंगे तो क्या होगा? और एक टर्म आ जाएगा प्लस डेल्टा H dissociation of them into moles of the weak base reactant. मतलब एसिड अगर वीक है तो भी डेल्टा H dissociation एसिड का आएगा, बेस अगर वीक है उसका भी, और एक टर्म आएगा प्लस डेल्टा H dissociation multiplied by moles of weak base reactant. Okay. And last point. Delta H dissociation is equal to 0 Now, how will you know if something is weak or strong? याद रखो जब भी COH वाला एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड ऑर्गेनिक का, वो हमेशा वीक होता है. Any carboxylic acid is a weak acid. First thing is that. Second thing, HF is a weak acid. Okay. तो आपको याद रखना पड़ेगा कि HF is weak acid और कोई भी carboxylic acid is weak acid. Coming to base, NH4OH is a weak base. NH4OH is a weak base. अच्छा और एक बात, इस फॉर्मूला में किलो कैलोरी में किया है तो इसके लिए -13.7 यूज किया है. अगर किलो जूल में चाहिए तो 57.3 यूज करना पड़ेगा. And this thing, delta H dissociation, this also will be in kilocalorie per mole. तो कोई मतलब नहीं होगा ना, सब किलो कैलोरी में नहीं होगा तो क्या मतलब है? Units have to be consistent. Okay. And sometimes they write like this. Neutralization reaction. Sometimes they ask you how do you represent a neutralization reaction? The neutralization reaction is represented or can be represented by this form, H plus OH minus giving H2.
So this is also another way of representing neutralization reaction. And for this लिखने के बदले सीधा मैं इसके बाजू में लिख रहा हूँ डेल्टा H is equal to minus 13.7 kilocalorie, which is equal to minus 57.3 kilojoule. My question to you is that why haven't I written per mole now, per mole of water? Why haven't I written? ये जो रिएक्शन लिखा है मैंने, इसके बाजू में मैंने क्या लिखा है सिर्फ डेल्टा H का वैल्यू लिखा है ना. Why haven't I written per mole of water formed? Why? सिर्फ देखो मैंने किलो कैलोरी लिख दिया है, पर मोल नहीं लिखा है, पर मोल ऑफ वाटर. बाय, क्योंकि रिएक्शन में 1 मोल ऑफ वाटर ही तो बन रहा है ना, तो 1 into 1, I mean 13.7 into 1 maybe 13.7 only finally. Correct. 13.7 multiplied by 1 will be 13.7. तो सीधा मैंने वो वैल्यू लिख दिया पर मोल ऑफ वाटर के लिए. Let's do one question now. Try to solve this question. तो आपको क्लियर हो जाएगा. करो ये क्वेश्चन and after this we will stop. The enthalpy of neutralization of oxalic acid by a strong base is minus 25.4 kilocalorie per mole. Find out start. फॉर्मूला दिखाया था मेरे को. स्क्रॉल अप करना है कि स्क्रॉल डाउन करना है? Very easy question if you know the formula.
आपको चैट पे भेजा है। यस, अंशुल शर्मा, हाँ आंसर करेक्ट है। और एक जिसने भेजा है उसने भी सही लिखा है, ZKH वाला, पता नहीं वो कौन है। और तुलिका का भी सही है, वही बोल रहा हूँ मैं, इट इज वेरी सिंपल। नो, आर्यन का गलत है। चलो मैं सॉल्व कर देता हूँ, टाइम नहीं है। आपको ही ब्रेक चाहिए। ओके, आंसर tell me one thing, have they mentioned in the question how many moles of oxalic acid are reacting? Because we need to know that oxalic acid के कितने मोल्स है, उसके बिना हम लोग काम नहीं कर पाएंगे। Have they mentioned how many moles of oxalic acid are reacting? अरे yes or no? जिन्होंने सही आंसर दिया है वो तो बताओ। सर बट एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन 1 मोल के लिए ही दिया है, तो 1 मोल एज्यूम करके एग्जैक्टली करेक्ट। या फिर आपको अगर कुछ भी अज्यूम करना है आप करो। बोलते हैं ना केमिस्ट्री में बेसिस अजम्पशन लेने के लिए कोई रूल्स नहीं होते हैं, जीरो और नेगेटिव के अलावा कुछ भी चलता है। यानी जीरो और नेगेटिव वैल्यूज को छोड़ के आप कुछ भी वैल्यू अज्यूम कर सकते हो। तो 1 मोल लेना जरूरी नहीं है, मैं 5 मोल लेके भी ये काम कर सकता हूँ, 10 मोल लेके भी ये काम कर सकता हूँ, कुछ भी ले सकते हैं। ओके, सो लेट अस assume that let us assume that there is one mole, 2 moles, कुछ भी ले सकते हैं। चलो एक काम करते हैं, x moles कर देते हैं। Let's assume that there are, ये और भी अच्छा होगा, x moles of oxalic acid that have been neutralized by a strong base हमें ये भी नहीं मालूम कि बेस कौन सा है, बट दैट्स ओके, हम लोग एसिड या बेस किसी एक से काम चला लेंगे। आपको n फैक्टर मैंने बता दिया है। तो enthalpy of neutralization is given to me as minus 25.4 kilocalorie per mole. That means delta H neutralization in this reaction will be minus 25.4 into x kilocalories. अब per mole लिखना गलत होगा because I have multiplied with the number of moles. So delta H neutralization is equal to minus 25.4 x kilocalories. ये एंथैल्पी चेंज है रिएक्शन का। डेल्टा HR जो बोलते हैं ना एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, वो ये है। ऑलराइट, ऑल्सो हाँ अभी क्या, फाइंड आउट द एंथैल्पी ऑफ डिसोसिएशन ऑफ द एसिड। चलो हो गया। ऑल्सो वी नो दैट delta H neutralization is equal to minus 13.7 into GEQ of oxalic acid reacted plus delta H dissociation
into moles of oxalic acid reactant. All the ones. Minus 25.4x is equal to what is the GQ of H2C2O4 in this case? X मोल्स है ना, तो GQ कितने रहेंगे? GQ is equal to moles into n factor, so 2x. Moles into n factor ना, तो 2 is the n factor ना H2C2O4 का. So GQ is moles into n factor, that is 2x. Plus delta H dissociation multiplied by x. Why? Because delta H dissociation multiplied by moles of H2C2O4, that is x. यहाँ से आपका x कट जाएगा. इसको सॉल्व करोगे तो उसको उस तरफ लेके जाओगे तो 2 किलोकैलोरी पर मोल आ जाएगा. This indicates, positive value indicates that energy is absorbed. देखो by default plus ही आया है ना. That always remember delta H dissociation will be positive क्योंकि heat is absorbed in order to ionize a weak component. Thank you.